Yeah, 1 second. Right, I'm back. Okay, so recording is running. That is good. Fine. So for today, now till last session, we worked on our own custom object. We have most of the things worked out on the custom object, at least the data points we wanted to create, what are, values, fields, all those things we wanted to create. I hope all of you have also performed the exercises and all of you should also be up to speed till this point. Right? Yes or no, guys? Yes. Okay, I hear only one person. सर इफ यू डोंट माइंड जो मंडे को आपने सेशन लिया था वो थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग नहीं है ना, दैट्स द रीजन. हाँ, कौन से which part of it you have to tell me ना? जो मंडे को आपने लिया था ना वही उसके बारे में पूछ रहा हूँ. हाँ, yes, I am asking you which part. आपको सेशन में कौन से पार्ट में डाउट था आप वो तो बताओ. तो पेज लेआउट के रिगार्डिंग ही. पेज लेआउट. या Okay, fine. Hi, good evening, Kunal. Yes. Kunal sir, if you could just recap that वो link button और वो action वाला, because I tried doing it, I took some reference also, but didn't get a clear idea how to do it. Just that one, and moreover, one more thing, that profile thing that we were doing at the end of that last meeting that we had, no? Okay. Okay. In which the tab was not visible to other users, even after we looked at all the perspectives which were there on profile. So Yeah. that thing also. Okay. Yeah. So that one I did not get a chance to look into. So that we will cover once we are going through profiles and how profiles works. Okay. For the buttons. Okay. Fine. Okay. So does anyone else have issue with all the things we did on Monday? Hello. Sorry? Hello, sir. Yes. Hello. आज का पहले ये क्लास है मेरा, तो जो पिछला वाला जो हुआ है वो रिपीट होगा क्या? कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है क्या उसका? Okay. Just 1 second. इसका कुछ रिकॉर्डेड है क्या? And Kunal sir, I have one request. Actually, I've tried There reaching are out recorded to. sessions. Yeah. Yes. Sir, I've tried reaching out to the Kunal from the management side now. Yes. Actually, I'm not there in that group in which you are sending the assignment. So I've requested them 4 to 5 times. People are not even responding me. I request you if you could just make a request on my behalf. Ask them to add me. Okay. Okay. So, okay. I think the communication I received was that uh, there was some issue due to which we were not able to create the new. So this session has a lot of people, right? If you see here, there are a lot of people here, right? So a lot of students who also were trying, just join the demo classes, but did not join. So all those are available here also. So I think they are just planning to create a new Teams chat, like a new Teams meeting invite where they will add everyone separately, and then the future sessions we'll be hosting there. Okay, I think there is some issue still happening with the Teams account. At least recording is working together, but no worries. I'll reach out to him and I'll ask him to sort everything out. Yeah.
That will be great answer. Thank you. Fine. Okay, so it seems then most people have issues with what was covered on Monday or were not able to understand what was covered on Monday. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Who all were able to create all those things which I mentioned? Anyone? Hello, sir. लास्ट टाइम मैंने जो एक्सरसाइज दिया था जो वैलिडेशन रूल्स का क्विक एक्शंस का और पेज लेआउट का was any one of you able to do the exercise? हेलो सर। No, sir. हेलो प्रो मैंने करके देखा बट जो कांटेक्ट वाला दिया था सर आपने एक्शन का सर, लेकिन हेलो पिछले सेशन ये तो पहले फर्स्ट ही क्लास है मेरा, पिछला कुछ भी पता नहीं है मुझे अभी क्या हुआ था तो। Okay, so my question is not to you then. बाकी सबके लिए जिन्होंने पिछला अच्छा, सेशन अटेंड किया था, ओके। right? Yeah, so guys, what part all of you faced issue with? Let's go one by one. Sagar, आपको क्या इशू हुआ था? कौन से पार्ट में इशू आया था? Sagar, are you there? Okay. Sorry, is this your combined name, Jhansi Rani, or just first name or what? Yeah, Jansi Rani. Okay. आपको कहाँ पे इशू आया था? Actually, I attended 2 classes only. So, Which recording ones? starting 125th, May 25th on batch, 2 3 days attended only. After that, we missed that classes because I have recently came to India, right? That's why so many works. So that's why I so many times I asked to recording sessions, please send recording sessions, but they're not sending any. Only I have one recording session only. So I log in my Salesforce um, developer edition. I log in that edition, create user. And after that, okay. So hold on. So you were able to create a developer edition. After that, you have not made any other changes. No. Salman, सर मैंने मंडे से स्टार्ट किया था, लेकिन मंडे का मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं रहने की वजह से मैंने अदर प्रैक्टिस की है, मतलब जैसे कि मतलब आई एम फैमिलियर विद द सेल्फोर्स एडमिन एक्टिविटीज। सो मैं एक बार मेरी स्क्रीन शेयर करके एक बार मेरा ऑग दिखाना चाहता हूँ आपको, इफ यू डोंट माइंड। my question is, you joined Monday, right? यस। Did you perform the exercise that was supposed to happen on Monday? नहीं, दैट्स द रीजन मैंने क्वेश्चन किया ना सर। आप थोड़ा सा हाईलाइट वापस एक बार कर सकते हो रिगार्डिंग द पेज लेआउट, बिकॉज मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग्स नहीं है।
Okay, I'll share अभी तक का जो recording है, right? I'll share all of those in the chat. One by one, I'll share. Hold on. Date कौन सा सबसे earliest है? 3 से शुरू हुआ है, right? फिफ्टींथ मई का रिकॉर्डिंग है ये. Okay, I'll share all the links immediately in the chat. I want all of you to check these links right now and confirm if you have access or not. Hold on. This I think I pasted a wrong link. सर उसको अपन डाउनलोड नहीं कर सकते क्या? The link. डाउनलोड परमिशन के लिए या डाउनलोड परमिशन के लिए आई थिंक यू नीड टू हैव द टीम्स अकाउंट जिसको इस लोकेशन का एक्सेस होगा, राइट? तो उसके लिए आई थिंक आई हैड आस्क्ड यू गाइस टू रीच आउट विद टू कुणाल or someone from Arbor Academy. They are the ones who will configure your access to all the tools required. तो उनसे बात करना पड़ता है कि फिर एक्सेस. अगर आपको इशू, okay, I'll tell you one. If you have any technical problem, right, you will reach out to me. Salesforce related कुछ अगर आपको problem, any other problem, आपका recording नहीं खुल रहा, आप join नहीं कर पा रहे session, आपको issues में access हो रहा है, you have to reach out to them. Okay, जो common WhatsApp group जो बनाया है, there I am also present, they are also present. Right now, I have shared 5 links here, right? How many people are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir, do you have admin rights to that group? 14 people. 14 people. Please check all of these links, and I want 14 confirmations that all of you were able to access these recordings. Hello, sir. हेलो. Yes. हाँ सर, चैट में मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है. एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ तो बट टीम्स चैट में मैंने भेजा है ना, आप रिकनेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा, आपको पुराने मैसेजेस दिख रहे हैं, राइट? चैट में. तो सर सर मैसेज दिख रहा है, वो लिंक भी ओपन हो गया लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा है. डाउनलोड नहीं होगा. डाउनलोड की परमिशन के लिए आई थिंक आपको ये फोल्डर का एक्सेस चाहिए. वो फोल्डर का एक्सेस के लिए अभी आप लोग आपका यू आर लॉगिंग इन फ्रॉम एन एक्सटर्नल ईमेल, राइट? जस्ट टीम्स के लिंक से आप लॉग इन कर रहे हैं, राइट? तो वहां पे उस फोल्डर का फाइल का आपको परमिशन देना पड़ेगा उनको. Kunal sir, do you have admin rights to that group that these people have made? जिसमें आप What's भी the हैं group? और जी सर, Yes. जिसके अंदर आप भी हैं, जिसके अंदर आप अपडेट्स डालते हैं या फिर हम चैट Right. करते हैं कुछ. सर आपके पास एडमिन राइट है उसका? हाँ. Yes. सर आप मुझे ऐड कर लेंगे. मैं आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच द अदर कुणाल. 4-5 बार मैंने मैसेज कर दिया. दीस पीपल आर नॉट एडिंग मी इन दैट ग्रुप. No worries. I'll call them. I'll inform them. और कोई है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है? Because just now I got to know that in the last
meeting that we had, you had given an assignment. उससे पहले आप चैट में डाल देते थे तो मैं वहां से कर रहा था. So now just now I've got to know. सेम हियर Fine. सर. मैं बस Okay, एक ही just व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ जिधर लिंक वगैरह आते हैं. अगर असाइनमेंट का अलग ग्रुप हो तो मुझे भी मतलब उसमें ऐड होना है. नहीं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही असाइनमेंट भी मैंने पेस्ट किया था. ओके ओके, One एक second, ग्रुप में हुआ है. 1 second, just give me 1 second. I'll have a call with you. ओके. Shreya, are you into that group in which they keep on sending last date to register, or is there any other group that you're into? सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन? I'm saying, are you into that same group in which Arbor Academy is sending links that last day to register, something like that, or you are added into some other group? Other group, I think the group name starts with Salesforce May 2025 batch. Maybe then you are into some other group. In my group in which I am added, these are just sending notifications like last day to register. Oh, I'm not in that group. Are Okay. there any important updates which were going in that group? Or is No, it no, okay if I no, don't no, join? no important update. Just Okay, this only okay, last day to register. okay. Then Mm, it's That is fine, right? that is only for registration. But this group is important now. Yeah, this Salesforce May 2025 batch, right? Yes, That's yes. important one. Okay, I'm not into that group. That's why I requested. okay. Acha, you need to send your email ID and name to the Yeah, mail. one of our just fellow participant into this meeting had told me by giving me a call that yeah, there is some other group. So from him I got to know. Otherwise I wouldn't have been aware about it by now. Oh, Kunal sir is also admin of that group, right? He can also add you in Yeah, that that's group. yeah, I requested him no that only. Yeah. Okay, I am also not able to reach them as of now. I tried calling them. I have few contacts. I tried calling them, but apparently no one is available as of now. So no worries. I think they must have logged off because they log off at around 8:30. So once they log in tomorrow, I'll call them and I'll ask them to just make everything uniform, make one WhatsApp group where everyone is added. Also make one Teams immediately where everyone is added. So that way we'll come with some structure. Okay. Fine. That is good. Right. Okay. Back to this. So, yeah, we were, sorry, what were you saying, Salman? Why you were not able to do it? उसका recordings नहीं है sir. Okay. And before that, everything is done, right? No sir. नहीं, पेज लेआउट वैलिडेशन वाले का रिकॉर्डिंग नहीं है, उससे पहले का सारा आपका करा हुआ है, चेंजेस वगैरह सब कुछ. नहीं, I started from the Monday only. Join किया मैंने नहीं, मंडे से ही. Okay. Quran sir. Yes, Wasim. Actually, आपने किस लेआउट में वो 3 बटन बनाए थे, वो स्टेप्स मैंने नहीं किया. तो बाकी का पूरा जो असाइनमेंट आपका था वो पूरा मैंने किया. और 3 बटन जो कौन से लेआउट में बनाया आपने, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी, तो I could not make that buttons. Just wanted to tell. No, that is fine. What I made the changes वो मैंने एम्प्लॉय पे किए थे, बट मैंने एक्सरसाइज में आप लोगों को बेनिफिट के लिए
I provided account and contact पे, right? जी जी, तो वो अकाउंट आपने और किया क्या कॉन्टैक्ट, सर? हाँ हाँ, वो मैं कर दिया। Okay, fine. Well, so one person then has completed. Lokesh, Yes, sir. yeah, have you made all the changes? Have you completed the exercise? Uh, yes, sir. But I have a problem for action, quick action. Hello. Okay. Yeah. Yeah, fine. Um, Okay. Let's. Can you share your screen? Which action you are facing problem with? Sorry, are you sharing? Yeah, we can see. Exercise. सर एक्चुअली मुझे इसमें जो कॉन्टैक्ट लेआउट में सर मतलब हेलो, Yes. हाँ मतलब वो सर शो नहीं हो रहा था जो फॉलो वो अप नीचे कॉल। दिख तो रहा है हाँ edit. हाँ, ऐड किया है सर मैंने, बट मेरे को मतलब शो नहीं हो रहा सर। Okay. दूसरे टैब में जाओ, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड ओपन करो. दूसरा जो टैब ओपन है तुम्हारा. अरे ब्राउजर टैब ही ओपन है ना, वहीं पे चले जाओ. हाँ. हाँ ओपन द कॉन्टैक्ट. ज्योति शर्मा ओपन करो. तो Okay. Click on the drop down. Right. So you see what is happening. यहाँ पे आपको कितने actions दिख रहे हैं? You see here 3, here 5, 8 and 9. Now go to the page layout. Contact page layout पे चले जाओ वापस दूसरे टैब में. दूसरा टैब ओपन है, राइट? पेज लेआउट का लास्ट टैब. Yes. How many actions are here added? यस सर। यहाँ पे कितने सारे actions added है, right? So a हाँ lot of सर। these actions are not showing there because there is a restriction page layout पे आप कितने दिखा सकते हैं पेज पे. Okay. If you have 33 actions here, 25 actions here, तो फिर वो सारे वहां पे एक बार में तो आएंगे नहीं. So you have to remove from here. So I have removed all these and only follow up call. Hello. Yes. Still it is not showing. Keep edit, always keep edit. Edit और delete always रखना. अच्छा अभी हटा दो, बाद में ऐड कर देना.
Go to the contact. Okay, go back to that object manager. पेज लेआउट पे जाओ, पेज लेआउट। तीसरा जो टैब है आपका पेज लेआउट वाला। ओके, क्लिक ऑन द पेज लेआउट असाइनमेंट, राइट साइड टॉप, पेज लेआउट असाइनमेंट। स्क्रॉल डाउन, ये एडमिन यूजर है राइट, कॉन्टेक्ट लेआउट ही है। Was not wrong. Fine. Do one thing. ज्योति शर्मा वाले टैब पे जाओ, पेज पे जाओ। राइट, ऊपर सेटअप वाले आइकन पे क्लिक करो, क्लिक ऑन एडिट पेज। एडिट पेज। ऊपर वो जो हेडर का एरिया है वहां पे क्लिक करो। राइट, डबल क्लिक करो वहां पे। राइट, नाउ इन दिस वन, होल्ड ऑन, व्हाट इज हैपनिंग हियर? You have the system layout, show as collapsed, hide unfollow, follow button। राइट, ये हाइड अनफॉलो फॉलो बटन को उसको रहने दो। ये विजिबल एक्शन बटन्स को 3 की जगह मेक इट 10। राइट, एंड स्क्रॉल डाउन, scroll down, this is the contact letter। fine, save। activate। assign as org default। लेफ्ट नीचे ले, assign as org default। org default पे जाओ पहले, click on back। So this main, see what we have is normally for every object there is a standard contact layout, account layout, right? Always keep that as a org default, assign as org default। उसके बाद जब आप ऐप स्पेसिफिक पेज लेआउट बनाते हैं तो उसको फिर आप अपडेट करना, डेस्कटॉप एंड फोन। Save, save। This is just a read only screen। सेव कर दो सर। हाँ, राइट। अब एकदम लेफ्ट में जो बैक एरो का बटन है वो लाइटनिंग ऐप बिल्डर के पास, उसको क्लिक करो। Why is this not getting added? ये फॉलो की वजह से हो रहा है क्या? ये एडिट पेज करके फॉलो को हाइड करना जरा। नो नो, double click on that section। yeah, yeah। फाइन, गो बैक एरो, क्लिक करो। ये ऐड क्यों नहीं हो रहा तुम्हारे इसमें? दैट इज स्ट्रेंज। गो बैक टू द पेज लेआउट। Go to the contact layout, edit the contact layout। Scroll down, follow file, change owner। What are the ones which are visible? Change owner and check for new data।
right? Remove everything other than follow-up call. Let's see what happens. Remove your Follow-up call छोड़ के बाकी सब हटा दो आप. सेव करो. नहीं हो रहा. I would just okay, go do one thing. Go to that क्विक एक्शन जो बनाया है उसको ओपन करना. तो टाइप क्या दिया है? स्टैंडर्ड नहीं दिया. ओके, गो टू द ज्योति शर्मा पेज ले. गो टू रिकॉर्ड पे जाना. ज्योति शर्मा रिकॉर्ड पे जाओ. ये आपका ये राइट साइड में जो ग्रीन ड्रॉप डाउन दिख रहा है. Yes. हाँ, या उस पे हवर करो. Go back to that page layout. Go back to the quick action. See, when your target object is a task. Okay. Okay. So task अगर कोई target object है, go back to the page, ज्योति शर्मा page. So ये जो activities है, Yes. right? इसके अंदर वो tasks आते हैं. I'll give you another example. आप page layout पे वापस जाइए. Out of all the things we removed, go here. There should be a modify the page layout. Contact layout को modify कीजिए. Right. Now here, go to that mobile and lightning actions. अब इसके अंदर do one thing. ये जो कॉल वाला है, कॉल वाले को आप ड्रैग करके डालिए पेज लेआउट पे. राइट. उसके बाद एक वहां पे वो दिख रहा है, आई थिंक लॉग कॉल भी वैसे ही है. एक वो पोल और पोस्ट दिख रहा है, राइट, राइट साइड एकदम. पोल और पोस्ट, इन दोनों को भी डालिए. Post. Okay, before you save, go to the record page once. Just look at the record page as of now. अभी क्या क्या कहाँ पे दिख रहा है, right? This is here, this is here. Chatter वाले टैब पे जाइए. Right, there's just a search. Go to the details tab, related के पास. You have all the fields. Now go and save the page layout. Right, refresh. Now go to that chatter. Right. Yeah. Okay. So different type of actions अलग जगह दिखते हैं. If you have already this activity bar here, right? So then since that task is a kind of activity, तो वो automatically
एक्टिविटी के अंदर चला गया इंस्टेड ऑफ ए बटन देयर। सिमिलरली जो आपका पोस्ट और पोल है, दिस सेम थिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ चैटर फीड, तो वो उसके अंदर आता है, इसलिए वो वहां पे ऐड हो गया। नाउ वन थिंग यू विल सी इज, ये जो यहाँ पे आया रिलेटेड में गया, जैसे डिटेल्स में गया। नाउ गो टू एडिट पेज, इसके ऊपर सेटअप में जाइए, एडिट पेज कीजिए। अब ये राइट साइड में ये जो एक्टिविटी और ये चैटर वाला टैब है, उसको क्लिक करके उधर साइड में देखो एक डिलीट का आइकन आता है, ब्लू वाला, या डिलीट दैट। सेव सेव करो पेज को। नाउ गो बैक। Right, so even though it is showing in that page layout, but based on its type, वो ऊपर बटन में नहीं दिखता है। Okay, now what are the ones which don't show there? You have to remember, whenever you are working with any kind of activity, by activity, call, task, call log, okay, those ones। और आपका चैटर के अंदर जो पड़ता है, जब आप पोल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, चैटर फीड में पोस्ट कर सकते हैं, सो दोज थिंग्स वो आपका एज अ बटन नहीं दिखते, वो वहां पे दिखेंगे। ओके, बटन में हमको कौन से दिखेंगे? द डायरेक्ट एक्शंस, जैसे कि हमारा अपडेट कर रहे हो आप रिकॉर्ड, फील्ड अपडेट कर रहे हो, राइट, दोज काइंड ऑफ Yes. टास्क विल बी अवेलेबल देयर। आप यू कैन गो, यू कैन ओपन अ कोड, जो मैंने बोला था, राइट, आप कंपोनेंट ओपन कर दिया, आपने फ्लो लॉन्च कर दिया, तो वो आपको Yes. बटन में ही दिखेंगे। ओके, फाइन, या यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। Fine. So, okay, let's continue. Okay, so Udit, you didn't know the assignment. ठीक है, कोई बात नहीं. You and Vijay, Sir, nothing I to do just there. while you were discussing, I was simultaneously trying to do it, but when I was doing it, No, no, it's fine. If I you see, if you know, uh, that's fine. See, Vijay also did not know, right? So that's fine. no, that is okay, sir. Uh, I'm just asking a doubt. Shubham. Okay, hold on one second. Let me just let's go through everyone. Let's then I will come back. Yeah. Shubham, for you, do you have? Were you able to do? Were you not able to do? Sir, me? Yes. Yes, sir. Same thing. जो लोकेश ने दिखाया सर, वो फॉलो बटन मुझे टास्क में ऐड हो गया था मेरा। और अकाउंट वाला बटन? अकाउंट वाला बटन सर, सेम जहाँ पे आप बोले थे वही वैलिडेशन रूल के साथ चेक कर लिया मैंने। कहाँ वैलिडेशन रूल के साथ बटन चेंज हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट वैलिडेशन रूल आपने बताया था ना, तो वो वाला मैंने किया है। एक फॉलो अप वाला क्विक एक्शन वाला जो है ना, नहीं, फॉलोअप का क्विक एक्शन नहीं बोल रहा मैं। ओके, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हैं। या आर यू शेयरिंग? यस सर। वी आर नॉट एबल टू सी। So is it visible? No, not yet. Okay, it is loading now. I am. Yes.
ओके या इट्स विजिबल नाउ। हाँ, अब आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये जो वैलिडेशन रूल का अकाउंट वैलिडेशन रूल आपने बताया था पहले, जो कि कस्टमर डायरेक्ट के पे आप जिसका सेट प्रायोरिटी होगा, इंडस्ट्री कस्टमर डायरेक्ट, तो उस पे आप वैलिडेशन रूल लगाने बोले थे। ओके, सेटअप में जाइए, सेटअप में जाइए। वो अकाउंट पे है ना, वो तो कॉन्टेक्ट नहीं, वो अकाउंट पे है रे। हाँ सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप सेटअप पे जाइए, आप वैलिडेशन रोल दिखा दीजिए, वो मुझे पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे इशू आ रहा है, आपको कहाँ पे इशू आ रहा है, बताइए। ओके ओके ओके। जो सर 1.2 वाला कॉन्टैक्ट वैलिडेशन रूल है ना, जो हम्म अकाउंट टाइप मुझे पार्टनर पे सेट करना था, हम्म उस पे इशू आ रहा है सर। जो कॉन्टैक्ट पे, एक मिनट सर मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, अकाउंट पे वैलिडेशन रूल मैंने बोला आपको। ये वाला सर 1.2 वाले में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि अकाउंट टाइप मुझे पार्टनर पे सेट करना था ना, तो वहाँ पे पार्टनर मेरा शो नहीं कर रहा है, कुछ और ही प्रोफाइल शो कर रहा है, जिसमें मुझे @company.com में मुझे चेक करना था कि जिसका पार्टनर अकाउंट टाइप होगा वो उसमें ये वैलिड होगा ईमेल। हाँ, जैसे सर यहाँ पे ओके, यू गो टू द वैलिडेशन रूल। आप वैलिडेशन रूल को ओपन कीजिए। यू जस्ट ओपन द वैलिडेशन रूल। ओके, यस सर। इसको कैंसिल कीजिए, मुझे रीड ओनली में देखना है। ये एडिटेबल में दिख, मेरी स्क्रीन पे थोड़ा ब्लर आता है। इसको यहाँ पे कैंसिल करो ताकि वो रीड ओनली में दिखे। आई कैन जूम इन। यस, ओके, एंड स्पीकर नॉट कंटेन। हाँ, तो इसमें कहाँ पे इशू आ रहा है? सर जब मैं चेक कर रहा हूँ ना यहाँ पे जब हम्म मैं चेक कर रहा हूँ नया अकाउंट बना के, हाँ, तो ये जैसे कांटेक्ट बना ये, के। हाँ जी, हाँ तो हाँ उसमें जब मैं पार्टनर अकाउंट टाइप जो है वो पार्टनर मुझे सेट करना है, हाँ, बट यहाँ तो पे वो आप कैसे करेंगे? आपका कोई एक अकाउंट रिकॉर्ड होगा जिस पे आप अकाउंट पे जाके पहले उसके टाइप को करेंगे पार्टनर, फिर कांटेक्ट बनाते वक्त आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ओके ओके, वो अकाउंट डॉट टाइप मतलब क्या है? अकाउंट के अंदर टाइप फील्ड है वो, राइट? अच्छा तो वो कांटेक्ट बनाते वक्त आप अकाउंट सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपको वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिस अकाउंट का टाइप आपका पार्टनर हो। ओके ओके, ओके सर, यहाँ पे ना ठीक है। नहीं नहीं, ये तो कांटेक्ट पे टाइप हो गया। हाँ, ये अकाउंट पे पार्टनर होगा, राइट? अकाउंट सर, यहाँ पे सर अकाउंट, ये जो अकाउंट टाइप है ना, यहाँ पे मुझे पार्टनर शो नहीं कर रहा है सेपरेटली, नहीं, ये चैनल आपको फील्ड में पार्टनर। ऐड करना पड़ेगा ना। वही तो, अरे दिस इज वेयर द लॉजिकल प्रोसेस इज सपोज टू कम। पिक लिस्ट में हमने कैसे देखा था? पिक लिस्ट में ऐड करना है, राइट? ओके राइट, हम आपको मैंने असाइनमेंट में ही वैलिडेशन रूल का फॉर्मूला भी दे दिया है। वो पार्ट में तो आपको वो लगाना पड़ेगा, राइट? लॉजिक, दैट हाँ इज द हाँ रीजन आई हैव नॉट मेंशनड इट, कि आपका वैलिडेशन रूल बनाते वक्त फेल होगा, बट आप चेक ही नहीं कर हम्म पाओगे। या
यही मैं कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे वो शो ही नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई। ओके, बाकी नो सारा वरीज। हो और गया ये सर। जो आपका क्विक एक्शंस वगैरह थे, ये सब हो गए थे? हाँ जी सर। अकाउंट वाला सर वैलिडेशन एक रूल, और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है। राइट? सर जैसे कि ये मुझे इस सेक्शन में ऐड करना था। अ, हाँ। ये फॉलो अप बटन जो है ना, मुझे इस हम्म। सेक्शन में ऐड करना था, बट मैं जब भी ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस पे, तो ये यहाँ पे देखिएगा सर। आप बटन लिंक्स एंड एक्शन पे जाइए। नहीं, लेफ्ट साइड में जो जहाँ पे बटन बनाया है आपने, वहां जाइए, बटन लिंक्स एंड एक्शन में, पेज लेआउट्स के नीचे जो है। हाँ, तो कहाँ जी है सर। आपने जो बनाया है फॉलो अप बटन? ये सर। ओके, फाइन, नाउ गो टू द पेज लेआउट वंस मोर, एडिट कीजिए। जब मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो सर ये ब्लॉक वाला साइन आ रहा है। मैंने बहुत बार कोशिश किया, बट हो नहीं रहा है सर। आप इसकी वजह वहां पे से आप एक और मोबाइल एंड लाइटनिंग, ऊपर वाले विंडो में मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन पे जाइए, लेफ्ट में मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस। हाँ, तो होल्ड ऑन, कहाँ है ये? जी सर। ई एफ, आपने तो लाइटनिंग का बटन ही नहीं बनाया। नहीं, वो रहा फॉलो अप कॉल, वहां पे है। हाँ, ये तो है, तो एडिट तो है, मोबाइल एंड एक्सपीरियंस में ही तो है, ओके। सही जगह ही तो है। ओके। मैं सर बार बार ये ट्राई कर रहा था कि हो क्यों नहीं रहा है। सॉरी। फाइन, नो वरीज, ओके, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके सर, थैंक यू। ओके, आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर सकते हैं। थैंक यू। राइट, या सो उदित, you had a question? One thing, sir. While you were explaining somebody, I was trying to make that follow up button by myself. Hmm. So even though I do not have a clear idea how to make it, about I don't have clear knowledge about that topic, but I try to do it, and somehow it is in the first attempt only it is showing in the वो highlight panel होता है ना उसमें it is showing, unlike the one अभी जैसे show नहीं कर रहा था ना. And why is Okay, it showing in mine, sir? मैंने कोई सेटिंग नहीं करा जिसमें मैंने वो 3 से 10 करा हो आपने एडिट ऑब्जेक्ट पेज में कौन सा जाके. दिया था? ऑब्जेक्ट कौन सा दिया था? सर मैंने तो अपना एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना रखा है एम्प्लॉयज का. एग्जैक्टली ना, तो वो आपका रहेगा टास्क स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको क्या बोला, चैटर फीड और चैटर पोस्ट के जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चैटर वाले टैब में चले जाते हैं। ओके, सिमिलरली ओके. जो एक्टिविटी के अंदर जो पड़ता है ऑब्जेक्ट, राइट, जैसे राइट. कॉल लॉग हो, टास्क हो गया, तो वो वाले आपके ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज वाले टैब के अंदर चले जाते हैं। ओके सर. ओके, if you select create a record and if you set any other object which is not activity, let's say आप create record कीजिए and do order, okay, तो आपका बटन बनेगा। अपॉर्चुनिटी बनाओ, बटन बनेगा। राइट, आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओ तो उसके लिए बटन बनेगा। ओनली फॉर दोज, बिकॉज वो जो साइड में जो एक वो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एक्टिविटीज वाला टैब, वो टैब का पर्पस ही है ओनली टू रजिस्टर एक्टिविटीज, क्विक नोट की तरह, इजी टू यूज। राइट साइड में एक्टिविटीज विल बी ग्रुप टुगेदर। ओके, सो फॉर दोज ओनली वो वहां पे दिखेगा।
अगर आप कोई भी नया कुछ बनाते हैं फॉर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट विच इज नॉट पार्ट ऑफ एक्टिविटीज, तो ऊपर ऐसा बटन दिख जाएगा। जैसे अगर आप अभी अकाउंट पे जाएंगे तो आई थिंक अकाउंट पे ऑलरेडी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑर्डर, ये सब बटन दिखेंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट यू सिलेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट के लिए वहां पे नहीं क्रिएट होता। Okay, sir. Understood, sir. Sir, still I have one request. If you could just briefly tell us again about why is it made and how it is made, that button, action, and links in a brief, just 10 minutes, if you could just tell me again. Yeah, no, that's what I mentioned, right? Let's go through everyone, then I'll create a quick action and show it to everyone. Okay, before that I want to address what doubts people are having. Right, sir. Thank you. Okay, Shubham, you can stop sharing your screen. Yeah, I stop it, sir. No, it's still Hello. showing. ये still दिख रहा है. Can I rejoin, sir? Yeah, fine. Right. Let's move to who do we miss? Okay, where did all the people go? Strange. Fine. Shreya, were you able to? Yes, sir. You were able to do everything. Sorry, sir. There was network issue from my side. Can you please repeat again? Yeah, no, I'm asking, were you able to do the exercise, complete exercise? Yeah, sir, I'm on it. Actually, I have already completed admin part from my side. So I will complete the exercise and I'll let you know if I have any doubt. Is it okay? So the admin part means what then? Actually, I am familiar with the admin part of the Salesforce, but I have joined the, I think this is my second lecture now. I'll complete the assignment, and if there's any doubt, I'll let you know. Is it okay? Fine. Okay, Okay, thank who you. do we have next? Mukta. Were you able to complete the exercise? नो सर, इन प्रोग्रेस में है। एंड मैं इशू फेस कर रही हूँ एक्शंस पे, जो आपका लॉग कॉल एंड कस्टमर फीडबैक है ना, वहाँ पे वो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैंने कोशिश भी नहीं की, वो टाइम नहीं मिला मुझे। एंड बाकी सब तो मैंने प्रैक्टिस कर रखी है एम्प्लॉयज पे, एंड आपने जो असाइनमेंट दिया था उस पे भी, वैलिडेशंस, रूल्स एंड ऑल। Okay. I think we had someone मैंने else. ट्राई किया था बटन लिंक्स एंड एक्शन का, Okay. लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो I just saw someone else was also there after Mukta's name. They left, did they? Not sure. Wait. Fine. No worries. See, guys, the only reason I'm asking is if you attempt, you will get queries. आपको ब्लॉकर आएगा, आपको इशू आएगा, तभी आप पूछ पाओगे। क्लास के शुरू में मैंने जब पूछा कि किस किस को क्वेरी आया है, किस किस को डाउट आया है, नो वन आंसर्ड, राइट? नॉट अ सिंगल पर्सन रेज देयर हैंड। बट देन आई आस्क्ड हु ऑल हैव कंप्लीटेड, देन आल्सो नॉट अ सिंगल पर्सन रेज देयर हैंड, right? So how will I evaluate the progress of the batch if I can't get communication from you guys? Either आप क्लास शुरू होते ही सारे मेरे को बोलो नहीं सर डाउट, so I'll clear the doubt, or all of you say no everything is good, we did everything, then I'm like fine, then it's great, we can move to the next topic. बट आप दोनों में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, फिर असाइनमेंट पता चलेगा असाइनमेंट भी नहीं हुआ, डाउट भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप बाद में आपको कोप करने में प्रॉब्लम होगा। आई विल टेल यू व्हेन वेयर दिस विल गिव यू प्रॉब्लम्स, टू वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस जहाँ पे प्रॉब्लम देगा। एक बार जब हम ये यूजर प्रोफाइल शेयरिंग रूल्स वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगा। ऑटोमेशन जब हम पढ़ेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगा। ऑटोमेशन में रादर आई वुड से फ्लोज में आपको प्रॉब्लम आएगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन। एंड कोड में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा।
You have to attempt, only then you will be able to bring reasonable questions. ओके आपको क्लास में सुन के शायद लगे कि हाँ समझ आ गया, बट करते वक्त फिर नहीं मैच होगा, तभी आपको वो डाउट क्लियर होगा, राइट? आप पूछेंगे कि ये डाउट आया है, ये इशू हुआ है, राइट? फाइन, नो वरीज. For now, let me just share. The only thing why I'm saying this is because I have had previous batches जो मतलब पूरा कोर्स कवर कर लेते हैं, ठीक है, with like no doubt, no answer, no communication. Then what happens, I'll tell you. Mock interview में when I start asking questions, then there was a person, out of 25 questions I asked that person, they were just able to answer 2. And their justification was नहीं उस टॉपिक में सर डाउट था, we had to clear. When were they planning to clear the doubt? जब actual interview देने जाएंगे. And I have seen this happen with previous batches. That is why I make this a practice to monitor the progress and ask people about that progress. क्योंकि फिर मॉक इंटरव्यू में जब लोग फेल होते हैं, देन देयर आर प्रॉब्लम्स, तब वो जाके क्वेरी करते हैं, नहीं आप ये फिर से पढ़ा दीजिए, ये फिर से कर दीजिए, ये टॉपिक फिर से कवर कर दीजिए. दिस हैपेंस. And for other people this has happened, which is why I have to take, at least precautionary measure. Fine. So now for quick actions, okay, let me just do what I'll do is I'll do it on the employee only. Okay, I think we created an employee. This employee 1. What are the actions? Edit, delete, clone, accept resignation हमने बनाया था, right? But no worries. हम क्या करेंगे, हम एक और फील्ड बनाते हैं. So let's say अकाउंट पे हमारा जो टास्क था, राइट, कस्टमर फीडबैक वाला, सेम थिंग विल डू हियर. लेट्स create a new field of text area, right? And let's make this employee summary. Okay, just हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है, employee summary. Let's do this. Let's add this on the page layout for now. Now what I want is I want a button जिससे मैं उस फील्ड को अपडेट करूं, राइट? सो वेयर डू वी क्रिएट दोज बटन्स? सो जब भी आप बटन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, then you have to go to this button links and actions. For the object for which you want to do this, you go to that object, you go to this window, and there you have this option. Now new button and link, as I told you, it is more for classic, right? For lightning you should go with new action. Now within this new action, if you see, Salesforce provides you lots of types. आप अलग-अलग टाइप के एक्शन ले सकते हैं. By what are those types? Basically बटन क्लिक पे आप क्या करना चाहते हैं, right? On the click of button, do you want to create a record? Now I'll give you use cases कैसे होगा. Let's say मेरे पास एक okay, think of it this way. मेरा जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मेरे पास एक डिपार्टमेंट का भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड देयर अब मेरा डिपार्टमेंट का जब रिकॉर्ड खोलता हूं, विच इज माय एचआर इज अ डिपार्टमेंट, राइट? सो देयर आई कैन हैव अ बटन ऐड एन एम्प्लॉय, जिस पे मैं चाहता हूं कि उस डिपार्टमेंट में एक नया एम्प्लॉय क्रिएट हो जाए. सो फॉर दैट व्हाट शुड बी द एक्शन टाइप आई शुड बी यूजिंग? Create a record. राइट. सो दैट इज अ यूज केस जहां पे क्रिएट अ रिकॉर्ड वाला टाइप हमारे लिए काम आएगा, कि आपको कुछ रिलेटेड बनाना है. Okay, you want to create a related record of, so it can be of the same type, it can be of a different type also. Okay, now जैसे सपोज एम्प्लॉई है, उसमें मैंने एक और बनाया है ऐड सबऑर्डिनेट, तो मैं मैनेजर के रिकॉर्ड से उसके सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड भी बना सकता हूँ. दैट इज आल्सो समथिंग कैन बी डन.
Other than this, we have these standard ones, right, which is the log a call and the send an email, right. These are standard actions हमारे रहेंगे, वो हम कर सकते हैं. जो आप लोगों को जो इशू आ रहा था, that was happening for this. Now if you see here, जब आप create a record कर रहे हैं, so it shows you what are the types of record जो आप इस ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं. That is why I told you, right, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में क्यों बनेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के अंदर एक रिलेशन है. ओके, अकाउंट से आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, अकाउंट से आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में एक रिलेशन है. आई कैन नॉट क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम एन एम्प्लॉय पेज, बिकॉज व्हाट इज द रीजन कि एम्प्लॉय पेज से अकाउंट बनाने देना है, उनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट. सो दैट इज द रीजन जब आप क्रिएट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दिस पिक लिस्ट इज अ सिलेक्टिव पिक लिस्ट, एग्जॉस्टिव पिक लिस्ट है. इसमें अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे. विद इन दिस एज यू कैन सी, रिलेशन के बेसिस पे आपका कस्टम ऑब्जेक्ट तो दिखा ही. और जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि देयर आर 3 जो जो हमारे स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके बेसिस पे आपका क्या होता है, एक्टिविटीज क्रिएट होती है. न्यू इवेंट, न्यू नोट और न्यू टास्क. ओके, सो दैट इज फॉर दिस. So let's do one thing. What I want is, okay, we won't be creating a record. We will be updating a field. Fine. अब ये तो हुआ, send email, log a call भी देख ली. Other than this, बटन से हम 4 अलग चीजें लॉन्च कर सकते हैं. Out of admin, things which we build using code or automation, which is what, एक visual force का हमने suppose कोई UI component बनाया है, वो चलाना है. Lightning component और lightning web component are two different things. I would rather go with when lightning component को आप aura component बोलें तो it will be more easy to differentiate. Okay, visual force, aura component, lightning web component और flow. Flow is a kind of automation. The other 3 are code. ये सब भी आप बटन से लॉन्च कर सकते हैं. Even when we will be doing this, हम लोग UI पे कैसे बटन क्लिक पे UI पे कुछ खोलना है, we will show that, right? But in this case, what I want, I just want to update a record. ओके, नाउ जब आप अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है. देयर इज नो ऑप्शन हेयर कि यहां से आप किसी और ऑब्जेक्ट को नहीं अपडेट कर सकते. दिस अपडेट रिकॉर्ड मींस यू विल ओनली बी अपडेटिंग दिस रिकॉर्ड. यही रिकॉर्ड जिसके बटन पर क्लिक किया है उसी को आप मॉडिफाई कर पाएंगे. सो अपडेट रिकॉर्ड हमने क्लिक किया, नाम दे देते हैं, व्हाट वाज द फील्ड वी क्रिएटेड, एम्प्लॉय समरी, राइट. अपडेट समरी, ये हमारा रहा बटन का लेबल, and save. Now button is created. Okay, but then what we have to do is we have to modify the UI कि बटन क्लिक पे आप अपडेट करना क्या चाहते हैं, क्या क्या फील्ड आप अपडेट करना चाहते हैं. So in our case we just want कि employee summary अपडेट करो आप. That is all. Save. So what we ended up with, अपडेट समरी होगा, ये हमारा बटन इस ऑब्जेक्ट पे है, और ये लेआउट के अंदर जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा फील्ड आप मॉडिफाई करेंगे उस पे, राइट. वी हैव जस्ट एडेड वन फील्ड. सो बटन क्विक एक्शन वी हैव क्रिएटेड. नाउ वी गो बैक टू द पेज लेआउट. सो इन दिस केस ये मेरा कौन सा पेज लेआउट है, आई थिंक एम्प्लॉय पेज लेआउट है, राइट. या सेल्स पेज लेआउट था. व्हिच पेज लेआउट हैड आई असाइन्ड लास्ट टाइम? लेट मी गो एम्प्लॉय लेआउट. फाइन. So for employee layout, we just need to add the action. अब एक्शन आप जब यहाँ पे देख रहे हैं, so it's same as जैसे आपको क्रिएट करते वक्त अलग अलग बटन से इन्वोक करना पड़ेगा, सिमिलरली यहाँ पे फील्ड्स अलग उससे आ रहा है, बटन्स अलग उससे आएगा, क्विक एक्शंस अलग उससे आएगा, एंड मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस अलग उससे आएगा. नाउ व्हाट यू विल सी हियर इज, ये क्विक एक्शंस में जो आपको दिख रहे हैं, so all of these are applicable for lightning, which is why this same update summary will also be available here and here.
Okay, but it is not available here. So buttons are only the ones जो आपका classic में जो standard buttons जो आपको दिखते हैं, right? And what we want is we will always pull from this lightning. So edit, delete, clone, accept, resignation था. Let's bring update summary also and save. Update summary got added here. बटन पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय नेम आया, जो हमने फील्ड दिया वो आया, सेव कैंसिल. If I add anything here, this is say test employee summary and save. Okay, I did not add the field on the page layout. Let me add the field on the page layout. I think I added the field on the page layout. Page layout refresh नहीं हुआ क्या? The page layout is not refreshed. Back to last day's problem. No worries. Let's see. Yeah. So employee summary जो field है that got updated with test employee summary. Okay. ये UI जब update होगा. Sir, how did we do that? Can you show that again? So, पीछे background वो inspect element है. Sorry. Can you show that again? Since it was not showing in the UI right now, you opened that background वाला वो ना जिसमें it was showing that it has been updated. Yes. This. Okay, right, sir. Thank you. This is an extension. अच्छा, वो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद. ये ब्राउजर पे एक एक्सटेंशन है, you can install, but only for your personal org use this. Okay, for company projects जब आप बाद में करेंगे, please confirm if others are using it or it is allowed, then only do it. Okay, fine. But ये एक extension है, Salesforce Inspector Reloaded. So there are multiple extensions which are Salesforce applicable. जैसे Lightning Studio है, Inspector हो गया, Organizer है, और भी बहुत सारे हैं. So based on your use, over time you can get used to. This has a lot of functionalities, right? आप export कर सकते हैं, अलग से आप query कर सकते हैं, right? यहाँ से आप record बना सकते हैं, log in as a different user. So a lot of things you can do. This is a good this extension, but I suggest people to once get familiar with Salesforce, only then start looking into the Salesforce extension, because किसी भी extension को काम करने के लिए it needs access to the data in the environment. Okay, यूजर का परमिशन हो, किसी एक यूजर के क्रेडेंशियल से लॉगिन करना पड़ता है, राइट? सो इट इज बेटर टू not use extensions until you are familiar with what all is happening in Salesforce. But fine. So this got added. Now the other part which we were having, which was let's have a call, right? Let's have a task and say let's have an event. See, log a call, task, event. Okay. Okay, sir. So only for task, call और event जो रहता है आपका, और एक नोट भी है, आई थिंक नोट भी है, there is a note, new note, वो भी आई थिंक वहीं जाता है. Not sure कहाँ गया न्यू नोट.
This also goes there. और poll और post तो मैंने आपको जो बोला था, right? तो ये तो वहीं जाता है. ये सेव किया क्या मैंने? नहीं. Did I save? No. What did I add? Oh, note does not go there. Then something else goes there. एक और कुछ तो भी आइकन है जो वहां जाता है. कौन सा था वो? What was it? Log up for link, email, send survey, question. I think it was question. नहीं, question, poll और post तो उसमें जाता है. There is one other here which goes there. Not sure which one it was, but it's not note. Yeah. And this poll, post और question ये सारे जाते हैं आपका. I think survey भी जाता है उसमें. In the chatter. Okay. Yeah. I think, let me go to the account here. I think account configure कर रखा है मैंने. Yeah, 3. I think only 3 were there then. Then only 3 were there. Something tells me there were 4. Yes, sir. There are 4. Yeah. New Okay, task, no, yeah, okay, yes. Email. Right, that's what I am thinking. Which one was it? Email. Right. Okay. Fine. Is this now clear? Actions and everything. Yes, sir. yes, sir. जिनको प्रॉब्लम हो रहा था, can I be optimistic and assume you all will be able to complete? Yes, sir. Fine then. Great. Okay, then please just complete everything. Please complete these exercises, because tomorrow what we'll be studying is basically, so today's plan was to actually study the relationship fields. Okay. So we have the lookup relationship. There is a master detail relationship. उसके बाद वो junction object का एक concept है. So that was what all we were planning to do today. But because of all this, fine, no worries. We can continue tomorrow. But tomorrow's session we will be covering the types of everything about relationships. We'll be covering tomorrow. Okay. So if I would say, I'm not sure if they will be able to sort out this Teams issue or not by then, by tomorrow. If they are good, if they are not able to, we will have the same thing here only. I'll meanwhile just let me stop sharing and stop the recording. I'll share the link of this recording immediately right now in the chat.